Hello guys, good evening everyone. So my name is Sumit Nahak. जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लाइव सेशन अटेंड किया होगा. So today also we are going to have a live session on physics. So I had got so many questions, the doubts you were having in physics. So I have selected a few questions. Okay, मैंने जो भी questions मैं अभी बहुत सारे questions थे, so I can discuss only a few questions with you in this 1 hour. So I have selected a few questions. So let's start the session. Okay. So before that, I will introduce myself. I am Sumit Nahak. I had got All India rank 691 in 2021, and currently I'm pursuing MBBS in AIIMS Bhubaneswar. So yeah, let's begin the session. Okay. So among the I have two screens. Okay, on the left side I have all the questions that I got for you, and on the right side I'll try to explain you the concepts in a very easier way. Okay, so please focus on the right side of my screen. Okay, so that you understand the concepts better. Okay, so first questions in which many people have doubt on is, what is stress and what is strain? Okay, if you go through the bookish language, what is the difference between stress and strain? So what is stress is basically, stress का मतलब माने हम इसको अगर तुम इजीली समझना है तो स्ट्रेस को हम लोग just for understanding, स्ट्रेस को हम लोग इक्विलिब्रेट कर सकते हैं प्रेशर के साथ. इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. मैंने प्रेशर का भी मतलब क्या था? प्रेशर का फॉर्मूला अगर आपको याद आए, अभी ये कौन सा चैप्टर का है? सॉलिड पार्टिकल्स का. बट आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था. रोटेशनल मोशन में नहीं, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में प्रेशर इज इक्वल टू क्या है? फोर्स इनटू ए, फोर्स अपॉन एरिया. सो सेम स्ट्रेस का भी मतलब वही है, फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, उसका मतलब है स्ट्रेस. देन विल कम टू स्ट्रेन. स्ट्रेन का बुकिश लैंग्वेज में मतलब क्या है? जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक सिलेंडर है या फिर कुछ भी, आप फॉर एग्जांपल एक रबर ले लो. रबर पे जब आप स्ट्रेस देते हो, रबर पे, तो रबर पे जब आप स्ट्रेस देते हो क्या होता है? ये अगर पहले उसका नॉर्मल लेंथ था, ओके, देन उसके बाद क्या होता है? रबर का लेंथ इंक्रीज हो जाता है. Isn't it? Length increases. तो अभी इसका अगर लेंथ n था, अभी लेंथ इंक्रीज होकर क्या हो जाता है? n days. ओके, सो लेंथ इंक्रीज कितना हुआ इसका? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू n days minus n. सो दिस इज द चेंज इन लेंथ. तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? द चेंज इन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. चेंज इन लेंथ या फिर वॉल्यूम, ये मैं 1D में बात कर रहा हूँ तो मैं चेंज इन लेंथ लिया. अगर मैं वॉल्यूम की बात करता तो मैं चेंज इन वॉल्यूम लेता. और जो भी चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेन. चेंज इन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन द ओरिजिनल लेंथ इट हैड अर्लियर. स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन dimension of the object upon the original length it had earlier. Okay, change in length upon the original length it had earlier. और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना भूल गया. स्ट्रेस में जो था, स्ट्रेस में आपका एसआई यूनिट क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट हियर? फॉर्मूला क्या होता है एसआई यूनिट के लिए? मैं आपको पहले से ही बोल चुका
एसआई यूनिट के लिए क्या करना होता है आपको, जो भी फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के लिए जो एसआई यूनिट है, कितना है फोर्स के लिए एसआई यूनिट, इज न्यूटन। जैसे मतलब जो फॉर्मूला है उसी को आपको कैसे लिखना है वो सीखना चाहिए आपको एसआई यूनिट के लिए। ओके, कैलकुलेटिंग एसआई यूनिट इज वेरी इजी। फोर्स न्यूटन हो गया, एरिया के लिए क्या लिखना है आपको, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, एन एम इनवर्स माइनस टू, ये हो गया स्ट्रेस का एसआई यूनिट। ओके, देन आया स्ट्रेन। स्ट्रेन का एसआई यूनिट क्या होगा, यहाँ पे देख लो, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। एल का भी वैसे यूनिट हो गया मीटर। सो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इट इज यूनिटलेस। Did you understand? This is all about stress and strain. Okay, so I hope it's very clear to you. Stress is force per unit area, and stress strain is change the dimension of the object upon the original length it had earlier, original dimension actually. Okay, okay, I think it's very clear to you. Then moving on to the next question for today, it's what is Newton's third law of motion? Newton's third law of motion. So, before speaking about Newton's third law of motion, I want to throw some light on the first and second law of motion. I hope you guys know what is first and second law. What is the first law of motion? First law of motion is known as the law of inertia. Law of inertia. Law of inertia का मतलब क्या होता है कि if a object will be on rest, or an object will be in the rest, or will be in the same direction, or will be in the uniform speed until and unless an external force is applied on it. Okay, ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट वही डायरेक्शन में रहेगा, किंबा या फिर वो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, या फिर वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, unless an external force is applied on it. Okay, that is what is Newton's first law of motion. What is second law of motion? Second law of motion क्या बोलता है, force is equal to rate of change of momentum. मतलब बेसिकली सेकेंड लॉ से हम लोगों को क्या मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला मिलता है हम लोगों को। ओके, फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, change of rate of change of momentum, इससे फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज बेसिकली द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोग बहुत सारे मूवी में देखे होंगे, या फिर इट्स वेरी कॉमन थिंग, मूवी में देखे होंगे। मूवी में बहुत सारे मूवी में बात करते हैं कि according to the Newton's third law of motion, every action has an opposite and equal reaction. मूवी में देखे होंगे आप बचपन में, या फिर क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा ये। ओके, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, और आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। ये एक वॉल है मान लो, ओके, एंड इफ यू थ्रो a ball, okay, and the force is F. If the force was F, the wall will also exert the same force F on the ball. Initially, the ball was exerting force F on the wall, and after this was the action, okay? This is the action, and this is the reaction. So, following the reaction, the wall will also exert the same amount of force F on the ball. Okay, that is what is reaction. So, यही होता है action और reaction. So, इसका क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, every action has an equal and opposite reaction. Okay, so इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
mind it guys कि force always is a vector quantity. Force is always a vector quantity. So force का magnitude है and along with that force का direction भी होता है. Okay? So जब भी हम लोग फोर्स को यहाँ पे इक्वेशन की तरह दिखाना है ना आप लोगों को, तो यही हमेशा आपको ख्याल रखना है कि डायरेक्शन भी आप लोगों को शो करना रहता है. सो डायरेक्शन कैसे शो करोगे आप? आपको क्या पता है, एक्शन में जितना फोर्स लगा था रिएक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है, रिएक्शन में भी उतना ही फोर्स लग रहा है. बट ये आपको क्लियर नहीं है, ये आपको क्लियर नहीं है कि डायरेक्शन कैसे शो करना है. तो मैं बोलता हूँ आपको डायरेक्शन कैसे शो करना है. इसमें एफ एक्शन, देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, एफ रिएक्शन. ओके, ये आपको पता था. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन शो करने के लिए क्या करना है, आपको एक माइनस देना है. मतलब एक्स एक्सिस को प्लस ले लो, वाई एक्स एक्सिस के इस डायरेक्शन को प्लस ले लो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो. अच्छा, ये तो करना था आपको, हो गया. ओके, दैट इज व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Okay, guys. So I hope it's very clear. We'll move to the next question for today's session. Okay. So what is third question is, what is resistance? What do you mean by resistance? Okay. So resistance is a topic in class 12. Okay. So resistance समझाने के लिए मैं आपको एक example दे रहा हूँ. Look at the example I'm giving. For example, this is a copper rod. What are this? Electrons. Electrons are moving. ये तो आप लोगों को पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में. इफ माने ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस थिंग इज बाय कन्वेक्शन. ओके, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन मूवमेंट डायरेक्शन, करंट इज डिनोटेड विद आई. ओके, आई direction. Okay, so what do you mean by resistance? This was an example of copper. Okay, next I'm giving you an example of a plastic or wood for per se. तो अभी देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी मूव हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी मूव हो रहे हैं, बट why do you say that copper has less resistance and plastic has more resistance? Why do you say? So what do you basically resistance mean? This is where the question comes. Okay, so resistance का मतलब क्या है? How do you define resistance? फर्स्ट मैं इंग्लिश में आप लोगों को डेफिनेशन बोल दूंगा, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कपर में और प्लास्टिक में डिफरेंस क्या होता है. Then we'll discuss regarding Ohm's law and what is the SI unit of resistance. That's it. Then we'll move to the next question. Okay. So पहले मैं आपको क्या बोलूंगा? What is the definition? So what is resistance? Resistance is defined as the force नहीं बोल सकते, offered by opposite force. Actually, resistance is defined as the opposite force offered by an object by virtue of its inherent property. ओके, तो इसका मतलब क्या पता चला आपको कि रेजिस्टेंस जो है इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. माने इट इज प्री डिसाइडेड that it will have a high resistance or it will have a low resistance. But we can change the resistance to some extent, but no, to
only to some extent we can change that resistance. Okay, but the inherent resistivity which it has, it's already, what do you say, it's already decided, it's already pre-decided. Okay, so you might be thinking why copper has low resistance and why plastic is high resistance. Why copper is low resistance? Main, because copper has so many atoms. I think you know what an atom is, which has a free electron on the outer cell, which has free electrons on the outer cells, which allows the copper atom to carry electrons in one direction, or to carry what? To carry current in one direction. Free electrons. Presence of free electrons in copper. Say for example, you can take copper, silver, iron, whatever you say, मतलब the metals, aluminium, कुछ भी metals ले लो जिसमें free electrons रहते हैं. Okay, so presence of free electrons in metal देता हूँ मैं, make them a good carrier. Okay, good carrier माने good conductor. ओके, गुड कंडक्टर. सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये लोग गुड कंडक्टर्स है, एंड इन लोगों का रेजिस्टेंस कम होता है. रेजिस्टेंस कम होता है. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू नाउ. एंड प्लास्टिक में क्या होता है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. सो since the number of free electrons is very less here, electrical conduction is very poor. Electrical conduction is very poor. That means resistance is high. Okay, I hope it's understandable for you people. And अब तो ये समझ में आ गया कॉपर में रेजिस्टेंस क्यों कम होता है और प्लास्टिक में रेजिस्टेंस क्यों हाई होता है. देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी चेंज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, रो एल अपॉन ए. रो एल अपॉन ए. ओके, सो हियर व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी. जो मैं बोल रहा था, इट्स फिक्स्ड, इट्स कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट. ओके, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, inherent property. It is length, it is area. Okay, so if we increase the length of an object, we can increase the resistance of an object. If we decrease the surface area of the object, we can decrease the resistance. Okay, for example के लिए मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, ये एक दिया, ये एक ऑब्जेक्ट दिया, तो इसमें इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? थिंक एंड टेल, थिंक एंड टेल. Okay, you thought, okay, I know you all have got the correct answer. The first object has increased length but a decreased area. The next object has a decreased length but an increased area. Okay, इसका एरिया छोटा है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा. लेंथ भी हाई है और एरिया भी कम है तो रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई. इसका लेंथ कम है और एरिया बहुत ही बड़ा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका कम हो. Okay, I know you have got the correct answer, all of you. Okay, और एक लास्ट चीज, रेजिस्टेंस का SI यूनिट. What is resistance SI unit? What is resistance SI unit? Resistance का SI unit होता है Ohm. Okay. Okay. So I hope it's very clear to you. So next, moving to the next question for today's session. What is velocity? So what do you mean by velocity? So मैं velocity को explain करने के लिए first I will explain what speed is, then I'll come to velocity. Then only I think you'll have a crystal clear concept on this. So what is speed? Speed is
डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोगों को आई होप ये पता होगा कि क्या है एक स्केलर क्वांटिटी, क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। फिर मैं बोल देता हूँ स्केलर क्या क्वांटिटी क्या होता है, हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या है, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो वेलोसिटी और स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूँ। ओके, इस वे से गया तो मुझे पड़ रहा है 10 किलोमीटर, इस वे से गया तो मुझे पड़ रहा है 2। तो ए टू बी में इस वे से गया। ओके, आई टुक द 10 किलोमीटर एंड आई it took me 2 hours to get there. It took me 2 hours to get there. So what will be my speed? My speed will be 10 upon 2. It's 5. It's 5. So how can you define speed and velocity? That's the main goal here. So speed का मतलब होता है it's not dependent on the direction. आप अगर किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, सीधा जाओ या फिर ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ, लास्ट में मुझे आप अपना डिस्टेंस बता देना और टाइम बता देना मुझे कितना लगा, तो मैं स्पीड कैलकुलेट कर दूंगा। दैट्स ऑल स्पीड सेज टू यू। माने स्पीड को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से वे में जा रहे हो। ओके, just the only thing that matters to speed is the distance you took and the time. Okay, then what is velocity? Velocity is displacement, your displacement upon time. Velocity क्या बोलता है, आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकते, डिस्प्लेसमेंट में ही आपको जाना होगा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। Displacement means the shortest distance. Do you understand? The shortest distance. So the shortest distance here is 2 किलोमीटर। So आपको डिस्प्लेस वेलोसिटी जब कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट ही देना है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना था, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ही लिखना है आपको। समझ में आ रहा है? देन टाइम जितना लगा इसके लिए टाइम देना है आपको। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट वेलोसिटी। ओके, समझ में आपको बेसिक डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड का मतलब होता है उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, सिर्फ नंबर बोलना है आपको। एंड वेक्टर में मैग्नीट्यूड के अलोंग डायरेक्शन भी बोलना है आपको, मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ओके, सो दैट्स द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ऐसे यूनिट दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, बट द डिफरेंस इज स्पीड इज a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Okay guys, so and one thing for you all, I think you all are preparing very, you all are very motivated, highly motivated and studying properly. Nowadays you can see the rank inflation in rank NEET 2024. So it's going to be even worse and worse and worse. It's never going to get better, mind my words. So the only thing we can do is give your everything for the next 2 years. Give your everything for the next 2 years. And mind it, guys, you are giving it everything, and if you are enough motivated, no one is going to stop you. No one can ever stop you from getting the point where you want to be. Okay, so first एक सोर्स डिसाइड कर लो कि कौन से सोर्स से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ओके, फॉर ऑल द 3 फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यू कैन वॉच द लेक्चर्स फ्रॉम हियर एटलीस्ट इन साथी, बिकॉज you have got all the good rankers here, so they will suggest you in the right direction. Okay, because we have been through the same thing that we are going through, so obviously you will get a good path
the right direction. So what's the lectures here? And that is not sufficient. That is not sufficient. What's the lectures? Understand the concepts like I'm teaching you now. Understand the concept, then go back and study. Go back, do self-study, and do a plenty of MCQs. Do a plenty of MCQs. Okay? So that's how you get to your target. Okay? So that's it. Self-study करो, MCQ करो, हो जाएगा आपका easily. Okay? Just you need to be motivated throughout the preparation. Okay? Okay. So moving on to the next question. So many people had doubt, what is a conductor? So मैं भी रेजिस्टेंस के बारे में इतना लेक्चर दे दिया हूँ आपको. So I hope किसी को भी डाउट ही नहीं होगा कि what is a conductor. फिर भी मैं थोड़ा टाइम लेके आप लोगों को समझा देता हूँ what is a conductor. Okay, we'll understand what is a conductor. Okay, so to be a conductor, the basic requirement you should have is you should have free electrons in your outer cell. Presence of free electron on the outer cell of an atom. मतलब जितने भी कंडक्टर्स है ना, सबके एटम्स में आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे. ओके, दैट्स हाउ यू डिफाइन ए कंडक्टर. कंडक्टर का मतलब क्या था? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल ऑफ एन एटम. अगर प्रेजेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है किसमें? आउटर सेल में, सो दैट can't carry an electron, that can't carry what? Electricity. So फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो करंट कैसे पास करते थे? ये डाउट हो सकता है बहुत लोगों में, कैसे पास होता है? दिखाता हूँ. सो इलेक्ट्रॉन्स इनसे मूव हो रहे हैं. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव होगा? उसके बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन. ओके, this will be the direction of current. If this is the direction of electrons, this will be the direction of current. So this is what is a conductor is. Conductor का examples, और conductor का property क्या होता है? It has low resistivity. ओके, मतलब जो inherent property होता है to resist, इसका less होता है. And it has high conductivity, माने conduction करने की ability high होता है. ओके, सो कंडक्शन हो गया. व्हाट इज लो रेजिस्टिविटी? हाई कंडक्टिविटी. ओके, एंड कंडक्शन पे मैं और क्या बोलूंगा? कंडक्शन पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा. कंडक्शन इज टोटली अपोजिट, इट्स अपोजिट थिंग ऑफ रेजिस्टेंस. जैसे मैं रेजिस्टेंस आपको समझाया था, उसी का ही बिल्कुल अपोजिट वर्जन होता है रेजिस्टेंस. That's all about conduction. Okay, so moving on to the next question. Explain magnetic field around a conductor. Okay, magnetic field around a conductor. Okay, I had seen many people asking this question, so let's discuss this out. Okay, so magnetic field around a conductor. So एक conductor मैं ले लेता हूँ first. तो ये है for example एक copper wire, and the current is flowing in this direction, upwards. Okay, so I don't know if you have an idea or not. I'll tell you. Anything that is carrying a electricity, anything
any conducting device, anything that is carrying current, it is producing a magnetic field around it. It's always remember. मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे. Any electricity carrying device produces a magnetic field around it. इसका मतलब क्या है? जो भी एक इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग डिवाइस है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो अभी हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है. ओके, सो ये आप लोगों को पता चल गया कि करंट इस अपवर्ड जा रहा है. तो इसके लिए एक मतलब एक रूल होता है कि मतलब कैसे इसको कैलकुलेट करना है. इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल. व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल का मतलब होता है, right hand thumb rule, what it is used for? Right hand thumb rule is used to find out the direction of magnetic field in an electricity carrying object. Okay, so एक electricity carrying object है, इसको यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करना है? इट्स बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करोगे? सो गाइस, make a circle of your four fingers and point your thumb upwards. Make your four fingers curl and thumb upwards. Did you do that? Okay. So now the direction of your thumb should be towards electricity, towards current. So point your thumb upwards. Okay, keep your hand parallel to your copy and make your thumb upwards. Upwards means in the direction of current. Keep your thumb in the direction of current. So now your four fingers, the rest of the four fingers are curled. As I told, it should be curled. So the rest of your four fingers are now currently showing the direction of magnetic field. Okay, so it's as simple as that. Did you understand? So अगर thumb आपका current के direction में है तो magnetic field यहाँ पे किस direction में होगा? ये circle है. Okay, pardon for my diagram. ये होगा आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. समझ में आ रहा है आप लोगों को? और एक एग्जांपल देता हूं मैं. अगर ये नीचे जा रहा है तो अभी फिर से thumb in the downward direction and curl your finger in the opposite direction. Okay, so अब किस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड? फिर से सर्कल बनाओ, इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड. It will be anti-clockwise. Okay, आया समझ में आप लोगों को किस डायरेक्शन कैलकुलेट करना? मैग्नेटिक फील्ड around a conductor. Okay, so it's very easy. Okay, just remember right hand thumb rule and you can calculate. Okay, so we'll move to the next question for today. Our next question asks us, what is the Coulomb's law and its formula? What is Coulomb's law? Okay, so before jumping into Coulomb's law, I'll ask you a few questions. Coulomb's law के लिए मतलब देखो, आप लोग क्लास 9th में या फिर अभी अगर आप लोग क्लास 12th में या फिर ड्रॉप ईयर में हो तो ऑब्वियसली आप क्लास 11th में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा.
फॉर श्योर पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल लॉ. सो आवर कूलम्स लॉ इज सेम एज ग्रेविटेशनल लॉ. मैंने जैसे जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मतलब बिल्कुल ही एनालोगस होता है कूलम्स लॉ किससे, ग्रेविटेशनल लॉ से. कैसे होता है आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा, बट ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग. अगर आपको ग्रेविटेशनल लॉ पता है तो आप लोगों को कूलम्स लॉ भी पता है. ओके, सो ग्रेविटेशनल लॉ आपको क्या बोलता था, अगर ये दो मास है m1 m2, okay, so what will be the force in between them, gravitational force. क्या होगा, कैपिटल G into m1 m2 upon if distance are r square. ये होता था, if I'm not wrong, gravitational law. हाँ, I hope you all remember this at least. So from now we will move to Coulomb's law. So Coulomb's law के लिए तो चार्ज लेते हैं हम लोग. Coulomb's law is defined for charge, guys. Okay, so these are two charges q1 q2 and the distance between them is r, for example. So Coulomb's law क्या कहता है, Coulomb's law is used to, first मैं लिख लेता हूँ, what it is used for, used to calculate force between two charges. Okay, so force calculate करना है between two charges. कैसे calculate करना है, force between two charges is directly proportional to q1, force is directly proportional to q2. माने जितना amount of charge होगा उतना ही ज्यादा होगा force. ओके, ये याद रखना है आप लोगों को. ओके, देन force is inversely proportional to r square. q1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, q2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो अभी क्या हो गया, हम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा अभी, f is proportional to q1 q2 upon r square. देन हम लोगों को अभी क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, f is equal to क्या हो जाएगा अभी, k मतलब एक कांस्टेंट, q1 into q2 upon r square. ये हो गया कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया. ओके, सो कूलम्स लॉ में जो k होता है, k का वैल्यू कितना होता है, ये बहुत लोगों को मतलब k का वैल्यू, k को देख के बहुत लोग डर जाते हैं. तो k को हम लोग कैसे लिखते हैं, what is k? K is a constant variable. K is equal to 1 upon 4 pi epsilon, 4 pi epsilon. Okay, this is all about Coulomb's law. और ये भी एक क्या होता है कि मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. k is equal to 1 upon 4 pi epsilon. इसका ऐसे यूनिट था न्यूटन. ओके, और ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल अगर ये q1 एक पॉजिटिव चार्ज है और q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दे विल रिपेल ईच अदर. Okay, if q1 is positive and q2 is negative, they will attract each other. Opposite charge attract होगा. अगर q1 नेगेटिव है, q2 भी नेगेटिव है, again they will repel. और q1 अगर नेगेटिव है, q2 पॉजिटिव है, attract. Okay, this is all about Coulomb's law. Coulomb's law का मतलब क्या होता है, फोर्स कैलकुलेट करना है in between two charges. That's all tells you about Coulomb's law. कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आ गया. F is directly proportional to Q1, F is directly proportional to Q2, then F is inversely proportional to R by square. F is equal to Q1 Q2 upon R square. Okay, आप लोगों को यहाँ पे हो गया Coulomb's law. इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल एक चार्ज ले लो +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, और दोनों में डिफरेंट डिस्टेंस है 2 मीटर. ओके,
सो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू क्या हुआ था? इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। 9 इंटू 10⁹9, ये याद रखना आप लोग। ओके, सो K का वैल्यू ऐड करो, 9 इंटू 10⁹9 इंटू 2 into 10 to the power minus 6 coulomb into 3 into 10 to the power minus 6 coulomb upon r square। r क्या है? 2, 2 into 2 4, 10 10 2, 9 3s are 27, 27 divided by 2 is 30, 13.5 into 10 to the power minus 3, it will be equal to 13.5 millinewton. This will be the force. Okay, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है? So we'll move to our today's next question. What is a vector quantity and explain with explanation? Okay. What is a vector quantity? Okay. तो vector quantity explain करने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ही दूंगा। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी माने हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स भी पहले किए थे, जिससे आप लोगों को आई थिंक इट्स आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका डायरेक्शन भी होता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के लिए? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, और क्या होगा? फोर्स। बहुत सारे एग्जांपल। स्केलर क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है, क्या क्या होगा? स्पीड, डिस्टेंस, फिर क्या होगा? स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वर्क, एनर्जी, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन होता है, देन वेक्टर का एड अप करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं हम लोगों के पास। सो वेक्टर क्वांटिटी इज ए सेपरेट टॉपिक गाइस। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी में और ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट दिस a lot. Okay, so next question, we'll move to our next question. What is acceleration due to gravity? And discuss this in detail. Acceleration due to gravity. Okay, what is acceleration? For example, this is Earth, this is an object. Acceleration due to gravity is nothing. First you try to understand the concept, then you will understand what is acceleration due to gravity. So first understand the concept, that we'll come to this. Okay, we'll come to this. First look at here. If we are seeing two objects m1 and m2, any two object in the universe, any two object in the universe, it's not only on the earth, any two objects in the universe always exert some force on each other, exerts some force on each other. Okay, but you might be thinking, why isn't it visible? Mane, if you're sitting here and a chair is there next to you, why you are not getting attracted to it, or why the chair is not getting attracted to it? You might get this question. Okay, so I'll give an answer. What is the question? Because the force between two objects is g into m1 into m2 upon h square, and that's the g, the value of g is 6.67 into 10 to the power minus 13. Do you see this figure? Minus 13. What does this mean? This means the force between you two is very small. Okay, इसीलिए कोई फोर्स आप लोगों को दिख नहीं रहा. But always remember,
any two objects on this universe always have a force acting between them. Okay? Okay. So you understood this? We'll move to our concept. So अगर समझ लो यहाँ पे मास का वैल्यू बहुत बढ़ गया. अभी देखो, अभी आप बात किस पे कर रहे थे? चेयर पे और आप पे. आपका वेट होगा 60 kg, चेयर का वेट होगा 30 या 40 kg, कुछ भी. तो इट्स वेरी लेस. ओके, सो ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा था. बट फॉर एग्जांपल M1 में हम लोग ले लेंगे पूरा सन. सन ले लो या फिर अर्थ ले लो, मतलब जिसका मास बहुत 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 बड़ा है. डू यू अंडरस्टैंड? सो जिसका मास बहुत बड़ा है, अगर आप वैसा ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको एक फोर्स फील होगा. आपको एक फोर्स फील होगा. क्यों एक फोर्स फील हो रहा है? देखो, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है अर्थ और आप लोग अर्थ से एक बॉल फेंका ऊपर, ये एक बॉल. ठीक है, बॉल का वेट ओके, फॉर एग्जांपल बॉल का वेट है 500 ग्राम, हाफ केजी, कुछ भी. बट अर्थ का जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा मास है. ओके, सो इन दोनों के बीच एक फोर्स एक्सर्ट होगा. होगा कि नहीं? एक फोर्स एक्सर्ट होगा. एंड दैट इज, and since the mass of earth is very big, it is able to neutralize this g, and the force exerting between earth and the ball is it significant, is significant. That is the reason ball is coming back to the mass. Did you understand this now? This is the reason the ball is coming back, and the ball is coming back by a force F. This is what do we call is gravity. ओके, इसी को ही ग्रेविटी बोलते हैं. मैंने फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्रेविटी का मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे है नहीं. ओके, मतलब एक फोर्स है जो सबके ऊपर लगता है. एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ओके, सबके ऊपर लगता है. बट व्हेन द मास इज वेरी बिग, द फोर्स विल बी सिग्निफिकेंट, एंड द फोर्स सीन इन अर्थ इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट्स ऑल. ओके, इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये अब हम देखते हैं. ओके, सो फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन दिस टू इज कितना होगा? बॉल का अगर मास ले लिया मैं स्मॉल है, फोर्स बिटवीन दिस टू कितना होगा? जी कैपिटल एम. कैपिटल एम मतलब अर्थ का मास इनटू स्मॉल एम. ये अगर डिस्टेंस आर है, इस आर स्क्वायर. ओके, आप लोगों को निकालना क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा. ये फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो लेट्स इक्वेट दिस टू. small mg is equal to capital G capital M small m into r square. m m कैंसिल हो गया तो स्मॉल g का वैल्यू क्यों आ गया? gm by r square. gm by r square. तो यहाँ पे g का वैल्यू कैसे निकालना है आप लोगों को? g is equal to कैपिटल G का वैल्यू पता है आप लोगों को? 6.67 into 10 to the minus 13 into take the mass of earth divided by distance. G will be near around 9.8 meter per second square. This is how we calculate the acceleration due to gravity, which is G is equal to, highlight कर लेता हूँ मैं, minus 9.8 meter per second square. Did you understand, guys? How do you calculate G equal to 9.8 meter per square? I hope it's very clear to you now. रटना नहीं है आप लोगों को चीजों को. Okay? Understand the concept and apply it. You'll be able to understand. Okay? So we'll move to the next question for today. Someone had asked, what are the three equations of motion? Okay. For describing what are the three equations of motion, I will make clear the signs we denote for all this. First is U. U is initial velocity. Then comes V. V is final velocity. Then A. A is the acceleration. Then T. T is the time. Then S. S is the displacement.
ओके, आई होप ये साइंस आप लोगों को एटलीस्ट पता होगा। तो 3 इक्वेशंस क्या होते हैं? ये 3 इक्वेशंस ना आप लोगों के मतलब फिंगर टिप पे होने चाहिए। दिस आर दैट बेसिक। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? First equation of motion is V is equal to U plus AT. V is equal to U plus AT. V का मतलब क्या है? Final velocity. U is initial velocity. A is acceleration. T is time. Okay. So यहाँ पे जो 1 2 3 4 क्वांटिटी है, इसमें से 3 क्वांटिटी आप लोग निकाल सकते हो। इट्स वेरी इजी पीजी निकाल सकते हो। ओके, so based on these 3 equations, solve plenty of questions, guys. Get some questions on this topic. Okay, moving on to the second equation. What is second equation of motion? Second equation of motion is S is equal to ut plus half initial velocity into time, half into acceleration into time, the time ka square. Okay, what is third equation? Third equation of motion says v square minus u square is equal to 2as 2as. This is third equation. ओके, सो इस पे बेस ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलेंगे। किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल्स ले लो या फिर एक फिजिक्स डीसी पांडे एचसी वर्मा कुछ भी बुक ले लो, सॉल्व करना बहुत सारे क्वेश्चंस होगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये आप लोगों को फिंगर टिप पे होना चाहिए। v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. Moving on to today's, I hope it will be the last, maybe the last question for today's session. So people had asked, what is the linear momentum? What is the linear momentum? So I'll discuss what is linear momentum. Linear momentum का मतलब क्या होता है? Momentum is again a vector quantity, guys. Momentum का मतलब क्या होता है? Mass into velocity. Mass into velocity. For example, एक ऑब्जेक्ट का मास दे दिया आप लोगों को 5 kg and told about its velocity. Velocity is, they told it's moving in 2 meter per second towards the east or west, whatever. So you need to calculate the momentum. How will you calculate momentum? 5 into 2. It is sums up to be 10 kg meter per second. Vector direction. This is linear momentum. Okay, linear momentum is equal to mass into velocity. मास हो गया 5 kg 2 kg। मतलब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जस्ट वो। ओके, सो लिनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इट्स वेरी सिंपल गाइस। ओके, एक होता है ये लिनियर मोमेंटम, ये हो गया लिनियर एक्सीलरेशन। और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला डिफरेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ था मास इनटू वेलोसिटी, वहां पे मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस होता है। ओके, वो होता है एंगुलर मोमेंटम। ये आप लोग जब आप रोटेशनल मोशन में आओगे तब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहां पे समझ में आएगा। ओके, so I'm with this concept I'm summing up today's session, guys, and please go through the go after going back, please do solve the questions. Without solving questions and without solving PYQs, previous year questions, you will not be able to crack this exam. So please go back and solve as many questions as you can. Okay, guys, so all the best. Thank you.